Hi everyone, welcome to StudyIQ YouTube platform. तो StudyIQ तरफ परिपूर्ण बैच 6 बा जो परिपूर्ण बैच रो जो हमें सीरीज चली एंड OPSC OCS प्रिलिम्स को आखि आगे रखी कि आमे माने गोटे सीरीज स्टार्ट करिछु दैट इज परिपूर्ण OPSC OCS परिपूर्ण सीरीज जोटा कि बेस्ड ऑन व्हाट दैट इज द थीम इज बेस्ड ऑन OCS प्रिलिम्स पई आगु को प्रिलिम्स अछि सेथिपे एटा करा जायछि ए जो सीरीज रे मु आज नै कि आसी आपन मन को ओडिशा ज्योग्राफी MCQ नै कि आसी परिपूर्ण सीरीज रे परिपूर्ण बैच हमर कंटिन्यू चली छि बैच 6 आसी गलानी जो माने एनरोल करिया कथा कर दियंतु राइट। तो ये आज ये जो आम वीडियोस रे देखिबा ज्योग्राफी रो किछि इंपोर्टेंस एंड क्वेश्चंस हम देखिबा जोटा कि बहुत इंपोर्टेंस आपण मन को पई कांसेप्ट विथ कांसेप्ट क्लैरिटी मध्ये हम देखिबा एमित नै कि खाली ये को देखिबा। तो चलो फिर ज्योग्राफी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करिबा राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखंदु कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल फीचर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट अलोंग द ओडिशा कोस्ट। तो ओडिशा कोस्ट रे हम जदी देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर से कहछि। नाउ ऑप्शन को जदी हम देखिबा जदी आपण माने समस्त ज्योग्राफी टिके अधे पढी थिबे ऑब्वियसली समस्त पढी थिबे जो माने प्रीलिम्स पई जाउछंती तो से तो पढी थिबे 100% जदी हम कहबा। तो लेट्स से ये आपनकर ओडिशा कोस्ट जदी हम देखिबा तो ये एठी होछि ओडिशा। तो ओडिशा कोस्ट से कहछि प्रोमिनेंट फीचर होछि कोन कोरल रीफ। देखंतु ओडिशा कोस्ट कोरल रीफ देखा जाय पर दिस इज नॉट प्रोमिनेंट। कोरल रीफ जोटा देखा जाय बहुत कां भा हमको चिलिका पाखरे टिके देखा जिवो तो बहुत कां भा दैट मींस हमें कहबा नेग्लिजिबल तेनो करी कि मु आकु प्रोमिनेंट कहिछि वर्ड देखंतु वर्ड होछि आपनकर प्रोमिनेंट सो एथरे कंफ्यूज हेबे नाही आज दिस इज रिटन प्रोमिनेंट सो प्रोमिनेंट इज नॉट कोरल रीफ। हां एडा हेई थांता कोठी हेई थांता जदी एई कथाटा हेई थांता हमरो भाबंतो एई पट साइड रे श्रीलंका अछि एंड हियर 80 कोरल रीफ आपनकर प्रोमिनेंट गल्फ ऑफ कच्छ रे आपनकर कोरल रीफ टा प्रोमिनेंट सो कोरल रीफ इज प्रोमिनेंट हियर कोरल रीफ इज प्रोमिनेंट हियर कोरल रीफ इज प्रोमिनेंट इन लक्षद्वीप्स in what that is a Lakshadweep coral reefs in Gulf of आमे कहबा मुनार जोटा आमे कहबा Gulf of what मुनार रे or it would be what Kutch region कथा में नहीं जिबा और अंडमान निकोबार कथा में नबा but this is not prominent in तो तेणु करके ये ऑप्शन आपन कहि जिवो कैंसिल हे जिवो that is why this option will be cancel। नेक्स्ट हमें आसीबा से कुछ क्लिफ इन द कोस्टल रीजन। देखो कोस्टल रीजन रे जेतरा में क्लिफ कथा कहूछे ना क्लिफ मींस व्हाट द वर्टिकल लाइंस माने आप माने जागो कंदरे कि इट्स ए वन काइंड ऑफ दीवार टाइप रो स्ट्रक्चर देखा जबो इन द कोस्टल एरिया रे और सेटा कोठी देखा जबो रॉकी कोस्ट रे दैट वुड बी साधारणतः क्लिफ हमको कोठी देखा जाए इट वुड बी योर रॉकी कोस्ट रे तुमको देखा जबो है ना ये तुमको जो हमारा इमर्जेंट कोस्ट देखा जबोनी ये जो ये साधारणतः केरला रे देखा जाए केरला कर्नाटक ये महाराष्ट्र एपट रीजन रे देखा जबो तो हमको ये जो क्लिफ ना कोस्टल क्लिफ हां ईस्टर्न इंडिया रे एक्सेप्शनल अछि गोटे जगह सेटा होछि आपनकर आमे कहबा डॉल्फिन नोज जेमती रेगला आमे कहबा आंध्र प्रदेश कोस्ट को छाड़ी देले तमिलनाडु कोस्ट कन्याकुमारी एपट साइड रे हमको क्लिफ किछि देखा जिवो अदरवाइज ओडिशा कोस्ट रे जेहेतु हमर मेजॉरिटी पार्ट डेल्टाइक रीजन सेति पे हमको क्लिफ देखा जिवो नाही अगेन दिस वुड बी कैंसल। तो ये क्लिफ हे जिवो जेमति कि भालार क्लिफ अछि हमर केरला रे कथा नै जानतो देन आसुची आपनकर नेक्स्ट ऑप्शन आसुची कोन द नेक्स्ट ऑप्शन होची लागून एंड बैरियर। तले जो लागून एंड बैरियर होची दिस इज द राइट आंसर सो आंसर वुड बी व्हाट लागून एंड बैरियर व्हाई द मेजॉरिटी जदी हम केबा जेमति कि आपनकर चिल्का कथा नै तो चिल्का लागून एंड दैट इज द व्हाट वन ऑफ द प्रोमिनेंट मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर हम केबा चिल्का लागून एंड द बैरियर सो दैट इज देयर चिल्का लागून बैरियर इज देयर सो आंसर वुड बी दिस atolls this is not there atoll is a what type of coral and मतलब coral already देखी छी and that would be found atoll कोडी देखा जिवो लक्षद्वीप रे देखा जिवो that would be not there so answer will be right ये आंसर हमको जाना पड़ेगा so this would be answer रहला कोन C lagoon and barrier so answer would be C lagoon and barrier right। चलो फिर and the next question आसीबा हमें ऋषिकुल्या river is unique in Odisha geography because of what ये आंसर टा आगुरु आसी जाई छी एनिमेशन गलत जगु लेट इट टागु छाड़ दियो एडी फॉर्म है लार्ज डेल्टा ना ये देखो लार्ज डेल्टा की करूचे गोटे गोटे ऑप्शन को हमें सॉल्व करबा जदी हमें देखिबा लार्ज डेल्टा इज बीइंग फॉर्म्ड बाय हु दैट इज द महानदी तले जदी हमें कहबा वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया तो नो वर्ल्ड रे हमें कहबा महानदी डेल्टा राइट ये जो महानदी डेल्टा करूची दैट इज दिस इज नॉट व्हाट इट डज नॉट फॉर्म्स तो ऋषिकुल्या is not forming that much of delta is a small one
I would say better it is forming what estuary. So this is not. If only like it's a large, no, it's a small one. It's a very small. It's a what I would say very small delta, not large delta. But this is forming one what more of I would say the backwater can not backwater. It would be estuary. So ye better to say what estuary form करूची. This is forming what estuary. तो ये एस्टुअरी फॉर्म करूची. इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी ना. ये तो महानदी रो कौन से प्रकार ट्रिब्यूटरी नहीं. ओंग जोंग तेल सियोनाथ हासदेव ये सब आमे पढ़ी से दे आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी. दिस इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी. जदि मैं ओडिशा मैप मो एठी मतलब ड्रॉ करके देखिबी आपण मन को हला. तो ये ओडिशा मैप जदि हम देखिबा तो ऋषिकुल्या इज हियर, महानदी इज हियर. तो दी जण भीतर किसी रिलेशन ही नाही. राइट तेणु करके एटा को हमें कहबा. सो दैट इज देयर. It has no major dams built on it. Right से कहूची कि हम तो किसी मेजर डैम नहीं. आमे जितने मेजर डैम ऑफ ओडिशा पढुचे देयर डज नॉट कम्स एनी मेजर डैम्स तो सेमती किसी आसु ही नहीं. सो दैट इज देयर. इट इज अबाउट नेस्टिंग साइट ऑफ द ऑलिव रिडले टर्टल सॉरी एई वर्ष को जे लगभग हम के 8 लाख रो 12 लाख ऑलिव रिडले टर्टल आसीथिला जोटा कि हमर कोठी ए जो ऋषिकुल्या माउथ को आसीथिला ए वर्ष बहुत ही फेमस. एंड ए वर्ष ऋषिकुल्या माउथ को सबुठु अधिक आसी ऑलिव रिडले टर्टल कहले आई मींस इट वुड बी 2025 as compared to previously जेते भी प्रेसिडेंट अछि ना हमरो बा हिस्टोरिकल एविडेंस जेते को अछि एति के ऑलिव रिडले टर्टल केबे आसी ही नाही. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट such a huge and ये टोटल ग्राउंड को कौन कहजे आरीबादा. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट रूकरी. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट रूकरी. सो दिस इज ऑल टॉक्ड अबाउट. ये सब हमको एटा ही कहा जाए हां कि नहीं. तो ये हमें जान ले. सो दिस इज देयर. तो एटा को हमें बुझले ताले दिस इज ये ऑलिव रिडले टर्टल्स. दिस इज व्हाट आई वुड से ये देखो आयुसियंस रे हम कहबा vulnerable to endangered रे जीवो vulnerable to endangered रे जीवो. राइट आको टिके मन रखिबो. ये बहुत इंपोर्टेंट एंड द खास गैर मथा सेंचुरी जहाँ पे एटा मध्य करिछि हम तो ताकू रिलेट करके मध्य सेटा मध्य पढ़ी परिबो. चलो नेक्स्ट आसीबा. सिमलिपल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ओडिशा. ट्राई करिवो समस्ते मध्य जेतर मु सॉल्व करूची यूट्यूब रे कोनोसी आंसर को मु सॉल्व करूची बा इन द मीन टाइम तमे माने मध्य कोन करबा को पॉज कर देबो. सपोज मु एटा को एटी के पॉज कर दिया. पॉज करके सॉल्व करो. आकु सॉल्व कला परे देन तमे आंसर को आसो. राइट इधर हम कहबा कि Simlipal biosphere reserve is located in which of the physiographical division. See, Odisha is largely divided into the physiographical region of coastal plain, middle mountain, rolling plain, western rolling plain, and the plateaus. 4, right? So what is happening here? So Simlipal biosphere reserve is located in which of the physiographic division of India? Whether it is Eastern Ghat, whether this is Chhatnagpur plateau and extension, whether this is Utkal coastal plain, whether this is Malkangiri. See, this is not there. Eastern Ghat is not there. So answer would be Chhatnagpur plateau extension. It's a plateau region. It's a what plateau region. तो जदि again वो तमन को draw करके देखे भी ओडिशा मैप so that clarity तमन को राशि जो yes के what exactly happenings. Let the clarity of thought to come out. So let's say ये ओडिशा मैप. This one is what middle mountain. एमती जाउची तमरो middle mountain. This is coastal plain and this one is your rolling plain and this one is your plateau. ये होची तमरो plateau and this one is the plateau. So these two plateau and this plateau रो part होची तमरो मयूरभंज. This plateau रो part होची तमरो मयूरभंज. So answer is what? C. The eastern ghat तबनी because eastern ghat starts from आमे कहबा मयूरभंज परे. Right? Then Chhatnagpur plateau में देखें. Utkal coast हम देखते हैं. This is not part of the coastal region. The coastal region comes from Baleshwar to नहीं कि हमें बहरमपुर कथा नहीं जिबा. Right मालकानगिरी बिल्कुल भी नो तो एटा में देखते हैं. Next answer को जिबा. Which of the following associated with Chilika Lake? This Chilika Lake is world famous for its what? For its brackish nature. For it what? The one of the largest lagoon in the world. सेथिपिन से famous. हाँ कि नहीं? Is associated with Chilika Lake से कहबा. The first Indian wetland under the Ramsar Convention 1981 yes 1981 रे Chilika becomes with Kaladio Ghana National Park सहित आमे कहबा one of the first wetland of India
which was added to the Ramsar site. So that is correct, right? Irrawaddy dolphin is found there, and Irrawaddy dolphin is the what? One of the keystone species of this unique biodiversity of India. तो ये keystone species also the flagship species, but you have to remember very precisely, this is not the brand ambassador of Chilika. The brand ambassador of Chilika is the fishing cat, but the keystone species, but your flagship species, that is Irrawaddy dolphin. Then lacustrine. What exactly the lacustrine? Lacustrine is a deltas, is a plain, sorry, is a what plain? Just imagine karo, lacustrine is a plain. जदि कौन से गोटे लेक को फिल अप करिकी गोटे रिवर प्लेन बनाउची बा डेल्टा बनाउची, then we will call it lacustrine plain. आपको बहुत थर मु कहिची, इवन ओपीएससी मते प्रीलिम्स रे पचारची गोटे यूनिक फीचर ओडिसा रो. देखो ये गोटे यूनिक फीचर एंड दैट इज रिलेटेड टू चिलिका. चिलिका रिलेटेड कौन सी जिनस होची, दैट यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज एंड हमें याकू देखिया पड़िबो. तो लेट्स से हमें कहबा ये होची चिलिका लेक, ये होची चिलिका लेक, राइट? तो ये चिलिका लेक हमें कहबा, एंड हियर इज दया रिवर इज कमिंग. द दया रिवर इज सेडिमेंटेशन. ए रीजन रे कोन हबो सिल्टेशन, सेडिमेंटेशन. बाय सिल्टेशन आई वुड से डूइंग एडी कोन होची siltation plus sedimentation. This siltation and sedimentation is filling this region. A region को कौन करूची fill करूची. A region filling हवा द्वारा एठी डेल्टा फॉर्मेशन होची. को डेल्टा फॉर्मेशन होची तो एठी गोटे कौन होची प्लेन फॉर्मेशन. आई वुड से गोटे तमे प्लेन को डेल्टा करो जहा को इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट प्लेन, प्लस हमें कहि पा रिवर तार गोटे स्मॉल डेल्टा भी मनौची. ए जो फिलिंग हेई आसुची डिपोजिशन करिवा द्वारा এই ভলিয়া প্লেন যদি ফর্মেশন हुए लेक को कैप्चर करके प्लेन फॉर्मेशन हेले, देन वी विल कॉल इज lacustrine प्लेन बोली ताकू हमें कहबा, राइट? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ lacustrine प्लेन. सो lacustrine प्लेन is not a phenomenon of Chilika. It's found there in all majority, if I would say, I am not saying majority of the lakes, important lakes like let it Ular Lake, let it somewhere else. So this lacustrine plains forms wherever there would be river. If the river falls or the droughts, then that will forms there. Right. So that is why all the three are correct. मु आपको कहली ये 1981 रे असले Irrawaddy dolphin कथा कह देछि. This is Irrawaddy dolphin, a flagship species. Next, 5 number. Odisha experience which type of climatic condition according to the Köppen climatic classification. So कुछ Köppen climatic classification रे आपको मध्य ओपीएससी क्वेश्चन पचाछि कि ओडिसा रे को टाइप ऑफ क्लाइमेट्स देखा जाए ना. देखंतु ये क्वेश्चंस गोटे जनरल क्वेश्चन एंड द जेनेरिक क्वेश्चंस, राइट? तो आपको हमें जानिबा बा पढ़िबा दरकार. एटा कोन ना ओडिसा जदि हमें देखिबा इंडिया मैप मु एमती तुमको ड्रॉ करके देखिबे कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, राइट? तो कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिस इज BWH, BSH, so these are like this, and CWG, DFC, Arunachal Pradesh. This kind of climates are there. AM type of climate, AW type of climate. This large area is AW type of climate, AS type of climate, right? So this is Odisha is coming under AW type of climate. It's a what? AW type of climate. Here AW means what? See, A stands for what? A stands for tropical. It's a what? Tropical one. And the W stands for winter dry. It's a what? Winter dry. So that is why it's a AW type of climate. It's a what? Winter dry type of climate. It's a what? Winter dry type of climate is there. So that is the, here you can have, right? So this one is what? AW type of climate. So that means it's a AW stands for what? Savanna. AW type of, or we call it what? Savanna, or we call it savanna. So tropical savanna type of climate Odisha is having, and that is either देखो थोड़े से तुमको पचारिबो it's a AW type, तो yes तुमको भी yes, it's a savanna type तुमको भी yes, ये सब yes मारी के हम चलिबो. Then humid subtropical. Next ना ये humid subtropical नो, this is the right. Mediterranean नो ये CS type of नो, this is not Mediterranean type of, मतलब समर आमे जाड़ा कोचे ड्राई नो. ये मेडिटेरियन टाइप को कोपेन डिनोट्स करे केमती CS टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो सेटा भी नो. ये स्टेपी कोठा आसीबो ना, स्टेपी भी तमरो ना. स्टेपी कोन आसे तमरो आसीबो एटा
BSH आमे जाकू कहबा ग्रासलैंड बा स्टेपी आसी जबो कोल्ड असले के लिखिबो आ हॉट असले एच लिखिबो ताले हमर आंसर कोन हबो ए आंसर इज व्हाट ए नेक्स्ट हसिबा में 6 number question consider the following statement regarding the that is Kanupur irrigation project से कुछ Kanupur irrigation project हमें कहा it aims to provides irrigation to the farmlands and drinking water to the surrounding areas of Keonjhar district से करा जिवो it based on Subarnrekha river देखो ये कहूची केउझर डिस्ट्रिक्ट से पर कहूची सुबर्णरेखा तो कुछ मैच करूची की मैच करूनी ना so this is not matching so this is only one कारण जदि हमें केउझरे करूचे it would be what this would be your certainly is going to be हम कहबा what बैतरणी बैतरणी ही हबो कारण केउझरे बैतरणी ही केसे गोना शिकारु हम जानि छेटा तणु कर की आमे गोटे साइड रे कहूचे केउझर गोटे साइड रे कहूचे सुबर्णरेखा तो बालेश्वर जीवो एटी तो जीवन भोगराई हे की जाउची आमे कहबा कोठी छोटनागपुर प्लेटू रो रांची रो ओरिजिन हे की आसुची तो तार डायरेक्शन आर डायरेक्शन कंप्लीटली उल्टा तणु कर ओनली वन इज द आंसर आकु तमे पढ़तो दिस इज व्हाट irrigation and the multi proposed next which of the following districts of Odisha are most irrigated and least irrigated district ये किसी factuals देखो these are factual कि most irrigated least irrigated less आमे कहबा least irrigated ताले से कहूची most and least तो गंजाम तमर रहबो सबटु most irrigated होची गंजाम and Jharsuguda is the least irrigated. Jharsuguda would be least irrigated. और कोरापुट हबो it suddenly is going to be पुरी रे ना पुरी रे बहुत सारा कैनाल अछि तो पुरी तो देखो एठी आउ गोटे टेक्निक होची कोन कि आमे देखो झारसुगुड़ा 3 थर रिपीट होची गंजाम 2 थर रिपीट होची तो झारसुगुड़ा एंड गंजाम कॉम्बिनेशन जति आमे देखिबा इट वुड बी मोस्ट टाइम रिपीट किए होची झारसुगुड़ा एंड गंजाम मोस्ट टाइम रिपीट किए होची झारसुगुड़ा एंड गंजाम एमिति मध्ये हमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज करिकि पहुंची परिबा most of the irrigated districts होची ओडिसा गंजाम and the least irrigated होची आपनकर झारसुगुड़ा so this is याको में देखि देले consider the following statement rice production in Odisha concentrated in the coastal plains and deltaic region which offer fertile soil and abundant water resource and what abundant water resource ठीक अछि एटा हम देखि परिबा the Bargarh district in Odisha is known as the rice bowl of Odisha ये बिल्कुल सत कथा The rice production of Odisha is concentrated कोठी हम कोस्टल रही है डेल्टाइक रीजन खास करी बालेश्वर भद्रक केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर ये तो राइस का तो बहुत ठीक अछि ना बहुत ठीक एंड बरगढ़ प्लेन एरिया बरगढ़ कोन जो प्लेन एरिया सो बिकॉज ऑफ दैट प्लेन एरिया बरगढ़ हम कहबे जो प्लेन एरिया जो मतलब चारिपटे हिली एरिया मझे प्लेन एरिया एंड बरगढ़ केनाल रही जोटा कि हमर कोठू हिराकुद ओरिजिन होची तो तेणु करके वाटर किसी अभाव नहीं एंड ये रीजन रे ह्यूमिड क्लाइमेट्स हमको दरकार कोन राइस पई वाटर इरिगेशन दरकार ह्यूमिड क्लाइमेट दरकार अलुवियल सॉइल दरकार तो ये जो कंडीशन सब सपोर्ट करूची सेति पई बरगढ़ को हमें एंड प्लस बरगढ़ रे हमर कोन हेइ थाए एक मिनट तो एटी के गलत हे जाई छै एक्सप्लेनेशन एटा सी हबारे डी हे जाई छै तो एटा को टिक के हमें करेक्ट कर दवा देखो एटा एक्सप्लेनेशन टा सी किंतु आंसर टा एठी डी हे जाई छी तनो मते टिके एठी करेक्ट कर दे एटा गलत हे जाई छी एक्सप्लेनेशन टा सी रो बट आंसर टा डी हे जाई छी हैला तो एटा टिके करेक्ट कर दो इट्स अबाउट इट्स अ सी एटा तमर रहइबो कोन सी एक्सप्लेनेशन देखि परबो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कटक पुरी बालेश्वर ये रीजन रे हमर राइस अधिक होची एंड बरगढ़ को राइस बॉल बोली कहै जे ऑफन इट इज कॉल्ड एज व्हाट ऑफन तमे देखि परबो तो बरगढ़ को हमें कहै जे also called as the rice ball बोली कहै जे राइट तो एक्सप्लेनेशन तमरो ठीक अछि एठी बरगढ़ देखो बरगढ़ इज राइटली कॉल्ड एज ठीक अछि तो एटा को हमें देखि देले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये हमें देखबा दैट इज केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर पूरी constitute the east and हमें कहबा साउथ ईस्टर्न कोस्टल एग्रोक्लाइमेटिक जोन रे आसे ए कोथरे से साउथ ईस्टर्न एग्रोक्लाइमेटिक जोन रे आसे जेंते में केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर पूरी डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ए माने कोठी आसे ए ठीक अछि ये तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन मु तुमको देखै भी देबी राइट स्लाइड देखै भी देबा आपन मानको से देखि भी पारिबे दिस जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई रेनफॉल विथ व्हाट हाई रेनफॉल ऑब्वियसली हमें कहबे एठी हाई रेनफॉल मध्ये हेता त एटा ठीक अछि तो मु क्लाइमेटिक जोन एग्रोक्लाइमेटिक जोन देखौ छी ये देखो तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन सो दिस आर व्हाट केंद्रापड़ा ये देखियो हमें
that is east and south eastern coastal plain आसुची केंद्रापड़ा टू नहीं किटा ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न हे गेला एटा हमर नॉर्थ हे गेला एटा होची नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन भद्रक एंड बालेश्वर नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन्स एटा होची हमें साउथ एंड साउथ ईस्टर्न हे होची दिस इज ढेंकानाल रीजन हम कहता कि मिडिल हम कहबा सेंट्रल मिड सेंट्रल टेबल प्लेन हम कहूचे देन केउंझर फेउंझर नॉर्दर्न सेंट्रल प्लेटू हे जिवो देन सेपटे हम कहबा ये गोटे मध्ये हमर प्लेटू आसुची ये मध्ये नवरंगपुर एंड ये मध्ये प्लेटू रे आसी जाउची तो सेटा मध्ये हाईलैंड एंड प्लेटू रे आसुची देन आमर एपटे देखा सदर्न ईस्टर्न घाट मध्ये सेटा ईस्टर्न घाट आसी जाउची तो ये हमें रोलिंग प्लेन्स जति हम नै जबा दैट वुड बी व्हाट ईस्ट सेटा रोलिंग प्लेन आसी जबो ये सुंदरगढ़ साइड रे हमें देखिबा वेस्टर्न प्लेटू आसी जाउची सो दीज आर द रीजन तेनु करकी आंसर हमर एटा ठीक अछि सो बोथ आर करेक्ट सो दैट इज व्हाट आंसर ताले कोन हबो कि आंसर विल बी both are correct so answer will be what both are ame कहबा correct so answer is what both are correct it would be what both are correct both are correct so consider the following statements the state's geographical spread extends from ame कहबा brahmagiri near chilika in the southwest to that is what Chandbali in the northeast से कहूची कि जो हमरो ओडिसा रे ज्योग्राफिकल एरिया जोटा ब्रह्मगिरी चिलिका टू पुरी जोटा हमर पुरी पाखरे टू नै की साउथ वेस्ट टू हम कह चांदबली ये तो बिल्कुल गलत हमरो तो बहरमपुर टू नै की बालेश्वर ना ये ब्रह्मगिरी केमती हबो पूरी ब्रह्मगिरी केमती हबो बिकॉज दिस इज कम्स फ्रॉम बहरमपुर टू बालेश्वर बी टू बी हम कहबा तो एटा तो गलत हे जबो then second option कहूची से statement कहूची कि ओडिशा ranks as the 9th largest state in India by area and 11th largest by the population ये देखो now that means एबे जदि हमें कहिबा this one is correct but ये जो state geographical spread ना ये गलत only तुम्हारा 2 is correct so that means answer B is the correct it would be what B is the correct one so only this one is correct next with reference to the forest type of Odisha consider the following statement ना से ओडिसा रो फॉरेस्ट को हमें देखबा स्टेटमेंट से देखो फास्ट कहै छी कि ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड्स आर द मेनली हमको कोरापुट मालकानगिरी एटा ठीक अछि सेमी एवरग्रीन देखा जाय एवरग्रीन हमरो देखा जाय नहीं सेमी एवरग्रीन देखा जाय लिटोरल एंड स्वाम्पी हमको कोठी देखा जाय इनलैंड से कहै छी वेटलैंड एंड हिल लॉक भाई हिल लॉक रे कुआडो देखा जीवो तुम निजे को लिटोरल कहउचो मैंग्रोव कथा कहउचो देन द स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट हिल लॉक ना एठी देखा जीवो ना कैंसर तो 2 कैंसल हे गेला जेते तोर 2 कैंसल होची आंसर कोन हबो 1 एंड 3 आंसर कोन हे जीवो 1 एंड 3 हो बुझा पड़तो समस्त को राइट देखो एटा कोन हेला हमरो ये हिल लॉक रे हबो नाही दिस वुड बी डेल्टाइक रीजन रे हबो ए कोठी रहबो तमरो डेल्टाइक रीजन रे हबो दैट वुड बी डेल्टाइक रीजन दैट वुड बी हमें कहिबा coastal region it would be coastal region re habo not in there so that is why so this one is correct so 2 got wrong 2 got what wrong 2 got wrong so ये हमको देखने को मिलेगा which of the following direct threats to the forest resource in Odisha forest resource in Odisha पे ना तो एथरे हमें कौन देखिबा ए तीनटा को हमें देखली सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन द हिली ट्राइबल रीजन बॉक्साइट एंड कोस्टल इरोजन सबको एठी देखा जाउछ इट्स देयर ताले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डायरेक्ट थ्रेट टू द फॉरेस्ट रिसोर्स सब जीव हमरो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पुडू चाष जहा को कहूचे सेटा भी गोटे नहीं कि कारण आदर कौन होची डिस्ट्रक्शन देयर वुड बी व्हाट डिस्ट्रक्शन देयर वुड बी फेलिंग देयर वुड बी व्हाट फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट देयर वुड बी व्हाट so that will also happens then bauxite and Odisha is what the one of the largest so because your highest bauxite concentration lies in Odisha and apart from that this is also comes second position and that is the what magnetite in the magnetite Odisha is number 1 and in terms of iron we are in the what
second, and the largest producer of iron ore, largest producer of bauxite. तो ये सब जो largest producer होते, that means finally you are depleting the forest. Then coastal erosion, this is also because almost I would say 20% of the coastal area of Odisha is subject to erosion. जोटा हम coastal erosion ऊपर report आस्तेला बहुत time रे मध्य discuss करिछि, and one of the highest is West Bengal, Kerala. They are facing the highest coastal erosion. So that is what it all is the answer. Answer is what? All. Next question. Next is what? 13 number question. Consider the following statement regarding the forest conservation of Odisha. JFM, Joint Forest Management. ये JFM कौन? Odisha fast initiate को मतलब बिल्कुल सत्य कथा. Before आमे के बाद national level रे हबा पूर्व JFM कथा आमे कहबा. Joint Forest Management रे कथा कौन? Actually एथरे कौन? जो ट्राइबल पीपल रहे जंगल रोची तांको हेल्प रे फॉरेस्ट को मैनेज करिबा, तांको हेल्प रे फॉरेस्ट को मैनेज करिबा, सेति में हम कहूचे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोली कहूचे, राइट. तो एटा हम कहबा, एटा बहुत बढ़िया कथा. ओडिशा हैज इंप्लीमेंटेड वन सुरक्षा समिति अंडर द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम. ये भी सत कथा. द स्टेट हैज नो बायोस्फीयर रिजर्व. ना ना एटा अछि ना, सिमलीपाल अछि ना, से भी पुनी कोथरे से यूनाइटेड यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व फंड रेसे का अंडर रेसे यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व फंड रेसे एटा आसुची कर मैप रीजन रे आसुची मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व रे आसुची. इट वुड बी यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व. तो दैट मींस तमरो ये तीन कैंसिल हिजो, तीन कैंसिल हे गेला पर तमरो बंचेला केतले 2 ओनली. तो ये 2 ओनली तो होची आंसर. पर देखो एटा टिके कंट्रोवर्शियल पार्ट टा अछि कहना ये जो तुम जेएफएम नहीं कि ये कंट्रोवर्शियल कहना कि कहती कि बेंगल रोची. तो ये टिके कंट्रोवर्शियल पार्ट मु कहबी. तो ये तो 3 गॉट कैंसिल. तो 3 गॉट कैंसिल जति आंसर की अनुसार हमरो 2 इज द ये होची कहना की सही भले सेट ही हेची. तो की जेतरो सही भले सेट होची दैट मींस हमको 2 जबो कहना एटा तो करेक्ट अछि. दिस वन इज करेक्ट एंड ये तो सरासर गलत. तो 3 को हटे देले 2 ही बाहर और एटा टिके डिबेटेबल. एटा टिके कहना बेंगल और ओडिशा टिके डिबेटेबल अछि. Next, with reference to the mangrove forest of Odisha, consider the following. Bhitarkanika National Parks, the second largest mangrove ecosystem in India. This is correct. Mangrove in Odisha are dominant by the Rhizophora and Avicennia. This is also correct. Rhizophora means what? Heritaria. Rhizophora is the common name. Acha. No estuaries mangrove forest are found outside Bhitarkanika in the state. Na, देखा जीवो, काई देखा जीवो नहीं. बाकी कोस्टल रीजन ने ब्रह्मगिरी साइड देखा जो, चिलिका साइड देखा जो, लिटिल बिट्स हम कहबा बाकी रीजन. तो 3 अगेन 3 तमर गलत हो. तो 1 and 2 इज द आंसर. इट वुड बी 1 and 2 इज द आंसर. काहे कि मु कहली बुझी परबे पे समझते एबे खाली कोन आउ कोठी देखा जन से कुछ नो एस्टुअर काहे देबी मोहाना रे देखा जीवनी की. अच्छा हम कहबा तमरो देबी मोहाना अछि. देन आमे एटा जो हमरो एपटे अछि मो अस्तरंग साइड कथा नहीं जो सेठी भी हमको देखिया मिलिबो. Then 15, which of the followings are true about the forest products of Odisha? Sal, bamboo are the minor forest. देखो साल टा माइनर फॉरेस्ट, बाम्बू टा माइनर है. साल इज अ टिम्बर. तो सी आसीबो नहीं. तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर की आसीबो जदि हमें कहबा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट अछि, राइट. ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 अनुसार जदि हमें देखिबा, so it will have like grasses, there would be ki minor forest produce grasses, there could be bamboo, there could be weed, there could be leaves, there could be lac, jhuna, there could be honey. So these things are what एमान को आमे कहिबा minor forest produce. but हाँ तो bushes आमे कहि परिबा, there would be what bushes आमे कहि परिबा, but not like हमें कहि परिबा साल is not. तेणु 1. Kendu leaf is a major source of seasonal. This is correct. Forest produce are marketed solely by Odisha Forest Development. This is also. So 2 and 3 is the correct answer. So answer B is the correct. So your what would be the correct answer? It would be B. So correct answer is B. तो कहते हैं animation मु करेनी because व्यस्तता भीतर ही परिनी. Right. So this one is the correct answer. Right. So this one साल is wrong. As this one is wrong, this one is wrong, this one is wrong, so this one is correct, right. So this is how you have to eliminate the option को eliminate करके हमको पहुंचे रहे. In the context of Odisha,
biodiversity hotspot, consider the following. Odisha biodiversity hotspot. The eastern Ghat of Odisha are rich in endemic flora and fauna. Endemic flora and fauna rich ଅଛି. Right, endemic flora and fauna rich ଅଛି. The forest ecosystem of Kandhamal and Rayagada are part of global biodiversity hotspot. बिल्कुल नो, global, national तो नो, global कोड बसो. As this is not part of national, so this is not the part of global as well. Right. So option 2 got wrong. Option 2 got wrong. This is wrong. This is wrong. So tale only one is left, and that is correct. Rich in flora and fauna. This is correct. Tropical mountain forests are found widely. Widely, no. This is some region, not widely. Some region like Mahendragiri, like tamaro Megasani, Guru Masani. आमे कहबा ए रीजन रे तुमको देखा जबो लाइक राइट और सब रीजन रे देखा जबो नहीं. Next, which of the following river origin outside Odisha flows through Odisha? किंतु ओडिशा देके जाए से माने किए महानदी सुबर्णरेखा. So they are the two, महानदी and सुबर्णरेखा. ताले 1 and 2 को आमे जाई परिबा. आ उडी ईप मध्ये अछि, आ उडी की अछि तमर ईप. तो 1 2 and 4, तो 1 2 and 4 ता. बट वंशधारा तो नुह ना, वंशधारा तो ईस्टर्न घाट ओडिशा रु ओरिजिन हुए, मतलब कलाहांडी रीजन रु आमे कहबा कि कोठु. तो हले हम जदी देखिबा एटा तो समस्त पढी दो बेसिक. मु रिवर भी पढी छि देखि दो तमन. रिवर मु पढी के रखी छि थेटा देखि दो. तो महानदी छत्तीसगढ़ रु आसुची, झारखंड रु आसुची, ईफ आसुची हमर छत्तीसगढ़ रु. तण वंशधारा ओडिशा. तण कर ये जति 3 गॉट रॉन्ग, 3 गॉट रॉन्ग, 3 गॉट रॉन्ग. सो दिस इज द राइट आंसर. Right, 1 2 and 4 is the right answer, वंशधारा. So that will be there. Then with reference to the Chilika Lake, consider the following. It is the largest brackish water lake in the India. बिल्कुल सत कथा, largest brackish water. तापर भेम्बनाडा से केरला second largest. It is designated Ramsar site and the biodiversity hotspot. देखो Ramsar site and the biodiversity hotspot हमें कही परिबा. जानि छ तमे 1981 रे. Nalabana island inside Chilika is known for the oil exploration activities ना. ये तो birds पे जाना जाए. Paradise of birds बोली को बाजे. एठी oil को आडवसला. तो 3 को cancel करो पुणी. तो 1 and 2 बाहरी हो तुम्हारा आंसर. आंसर कौन बाहरी 1 and 2 बाहरी. सो आंसर would be 1 and 2. ऑयल एक्सप्लोरेशन को उठी. हाँ तमे कहबो कि हमरो ये जगतसिंहपुर एपट साइड हे परबा. पूरी रे हमर मध्य जो रीजन टा से जो डिस्ट्रिक्ट जोठी मिलिथिला ऑयल आफ्टर फानी परे परे ऑयल सेठी मिलिथिला. तो 3 got cancel, 3 got cancel, 3 got cancel. It would be there. एटा नळबळंटा ऑयल पाइन हो, बर्ड्स पाइन फेमस. दिस इज फेमस फॉर व्हाट? बर्ड्स पैराडाइज बोलिया को कुआ जाय. राइट, so that is there. Then which of the followings are threat to wetland ecosystem in Odisha? Encroachment, ये सब हमें कहि परबा. all this is applied based question. Wetland को this is applied based question, right? This is what applied based questions हमें कहि परिबा, and that is there. Now 20, consider the following statements about the Odisha's coastline. Odisha coastline. Odisha has one of the longest coastal lines on the eastern seabed of India. The coastal line is highly vulnerable to the cyclonic activities due to its geological locations. हम कहिबा. There is no significant ports or harbors along the Odisha coast. हम कहिबा. ओडिया कोस्ट नहीं ना अछि ना, हार्बर अछि ना, पारदीप पोर्ट अछि ना. तो 3 तो पुनी रॉन्ग हे जबो. राइट, तो तेणु करी 3 पुनी रॉन्ग हे जो. पारदीप पोर्ट अछि, गोपालपुर अछि, धामरा अछि. नो केमती नो सिग्निफिकेंट पोर्ट ना ना एमती हे परिबनी. तो ये 3 कैंसिल हे जबो. तो हे जबो ये. तले ओडिशा हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल ईस्टर्न कोस्ट सी बोर्ड्स ऑफ इंडिया. देखो ये गोटे होछि हैज द लॉन्गेस्ट कहि परबनी. वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिखा छि ताल करेक्ट. लॉन्गेस्ट नो आंध्र प्रदेश अछि, तमिलनाडु अछि, तापर ओडिशा थर्ड रे आसे. तेणु करी हमें तमिलनाडु नंबर 1 ईस्टर्न कोस्ट सबुठु लेंथीएस्ट कोस्टल लाइन का तमिलनाडु, तापर आंध्र प्रदेश, तापर ओडिशा. तेणु वन ऑफ द अछि तो ठीक अछि. हाई वनरेबल एटा अछि. साइक्लोन तो ओडिशा कोस्ट जानछ फेमस फॉर द साइक्लोन. बट ये 3 हबो नहीं. तो 3 को कैंसिल करो. 3 को कैंसिल करबा कोन पे मु कहली तमन को हाउ टू कैंसिल एंड व्हाई टू कैंसिल. राइट, तो 3 गॉट कैंसिल. नो लिखाई छै, ठीक लिखाई छै नो. So 3 got cancelled, 3 got cancelled. So answer would be 1 and 2. Answer tomorrow 1 and 2. तेणु राइट, तो ये परिपूर्ण बैच हमर जो 6 ऑलरेडी चली छी. राइट,
एटा बैच 5 रो राइट बट बैच 6 ऑलरेडी हमर चली जोटा कि लास्ट डेट आपन जुलाई 31 था बैच 6 चली तो कंटिन्यूअसली गोटे पर गोटे बैच आसूची परिपूर्ण बैच जो थे मु मध्य क्लासेस नउची एंड हमर ओडिशा रो जते भलो भलो फैकल्टीज चाहि आपन राइट पुरुषोत्तम सार कथा नियंतु जटाधारी सार कथा नियंतु एंड सोशियोलॉजी मध्य बहुत रिनोड फैकल्टी हमर रहिचंती सार को कथा नहीं जानतु ना प्लस अदर फैकल्टीज मध्य रहिचंती हम केवल ओडिशा रो जते ओडिया फैकल्टीज मध्य रहिचंती सर समल सार कथा नियंतु सर जो हमर सोशियोलॉजी पढौचंती तो ग्रुप ऑफ फैकल्टीज आमी अछु जो मानको तुमको ओडिया रे एंड विथ कांसेप्ट क्लैरिटी दे पारुथबो सब बोले आपन मन को सहित रहिछु एंड स्टडी आईक्यू जॉइन द स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म ता व्यतीत हमर बहुत सारा टेस्ट सीरीज वगैरह मध्य लॉन्च हो जाइछि ओपीएससी टेस्ट सीरीज में सो जॉइन द प्लेटफॉर्म एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स with this I will end the session. Thank you everyone, have a good day to all. Like it, subscribe it, share it and comment it. Thank you all.